Hello dear students, today we will discuss worksheet number 51, Heredity and Evolution. Mendel's experiments, law of dominance and law of segregation. Mendel's used plants that were pure breeding for a trait and considered contrasting characteristics. He crossed plants with contrasting characters and studied the progeny of first generation and second generation and calculated ratios of plants with contrasting characters. Means उन्होंने लिए या तो लंबे के साथ छोटे या बोने पौधे का क्रॉस करवाया, रेड या पर्पल कलर के जो फ्लावर वालों के साथ करवाया उन्होंने वाइट कलर के, यानी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए मेंडल्स ने। तो मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। मेंडल विद हिज केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स अनकवर्ड द सीक्रेट्स ऑफ हेरिडिटी और हाउ पेरेंट्स पास कैरेक्टरिस्टिक्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। Mendel noticed that the plants in his garden were not the blend of the parents. For example, a tall plant and a short plant had offspring that were either tall or short, but not medium in height. Such observation led Mendel to research further. He decided to experiment with pea plants to find out how characteristics are inherited. Mendel experiments with almost 30,000 pea plants over next several years. Based on his experiment, he formulated some laws which are very important in studying about heredity and inheritance. If we take example of plants that were cross-pollinated with two breeding for violet flower and with plants two breeding for white flower, the resulting hybrid in the F1 generation all had violet flowers. After self-pollination in F2 generation, 3/4 of plants had violet flowers, while 1/4 had white flowers. So approximately the ratio was 3:1, यानी 3 violet थे, 1 जो थे वो white थे। यानी ऐसा नहीं हुआ कि नेक्स्ट जनरेशन में वॉयलेट और वाइट का कुछ बीच का कलर हो गया। वॉयलेट वॉयलेट ही रहे और अगर बने वाइट तो वो प्योर वाइट ही बने। Law of dominance. Mendel's law of dominance states that in a heterozygote, when the two chromosomes in homologous pair are different, one is dominant and other recessive, one trait character will conceal the presence of another trait for the same characteristics rather than both alleles contributing to a phenotype. The dominant allele will be expressed exclusively. The recessive allele will remain silent but will be transmitted to offspring by the same manner in which the dominant allele is transmitted. Their recessive trait will only be expressed. Trait नहीं है, trait है ये. The recessive trait will only be expressed by the offspring that have two copies of these alleles. These offspring will breed two when self-crossed. Dominant, the trait which express itself during F1 generation. Example, round seeded violet colored flowers. Violet colored flowers. Recessive, the trait which is masked by the presence of dominant allele. Example, wrinkled seeds and white colored flower. यानी डोमिनेंट ट्रेट वो हो गया जो कि एक्सप्रेस हो जाते हैं जैसे टॉलनेस, और रिसेसिव वो हो गई जो कि एक्सप्रेस नहीं हो जाते, F1 जनरेशन में दबे रहते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मेंडल ऑब्जर्व द ट्रेट which were absent in the F1 generation had reappeared in the F2 generation. This law explains that the pair of alleles segregates from each other during gamete formation so that only one allele will be present in each gamete. Mendel proposed this law after observing that pea plants with two different traits produce offspring that all express the dominant trait, but the following generation express the dominant and recessive trait in 3:1 genotype ratio. What are dominant and recessive alleles? तो आंसर देख लेते हैं इसका। The alleles that express themselves are called dominant alleles and the alleles that do not express themselves are called recessive alleles. आंसर नंबर 2, मोनोहाइब्रिड क्रॉस देख लेते हैं हम। मेंडल का टॉल प्लांट ले लिया, डॉर्फ प्लांट, ठीक है। टॉल प्लांट का जीनोटाइप दिखा था TT से और डॉर्फ का स्मॉल t से, तो इनके गैमेट्स बन गए TT और TT
स्मॉल टी बन गए, तो F1 जनरेशन में टी स्मॉल टी और कैपिटल टी बन गए, तो ऑल टॉल प्लांट्स के में ये इस तरह से जीन्स बन गए हैं, ठीक है। और जब इनमें सेल्फ पॉलिनेशन हुआ F1 जनरेशन के बाद, तो इनके गैमेट्स इस तरह से हुए, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस तरीके से F2 जनरेशन में दोबारा से ड्वार्फ प्लांट जो है वो अलग सेग्रीगेट हो गया और टॉल प्लांट बन गए। रेशियो 3 और रेशियो 1 का फिनोटाइप, यानी देखने में तो 3 ही टॉल थे और एक ड्वार्फ था, लेकिन फिनोटाइप में यानी एक प्योर टॉल था और एक प्योर ड्वार्फ था, और दूसरे में दोनों के ही जीन्स थे, तो रेशियो जीनोटाइप 1:1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट do you mean by heterozygous? Heterozygous means having two different alleles, example TT or RR having different kind of genes. आंसर क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसका आंसर है ये, a trait may be inherited but may not be expressed because recessive trait is transferred to next generation but only dominant is expressed. Example in pea plant, in cross between tall and dwarf pea plant, all are tall in F1 generation.